Greetings of the day, everyone. Welcome to your maths class. As you know, in our previous videos, we have already discussed about the basic concept of our exercise 1.1. So now we are going to start our exercise, that is 1.1 of number system. So let's begin. So our first question is 0 a rational number? And can we write it in the form of p by q, where p and q are integers and q will not be equals to 0? Let's begin with the solution. So what do you think? Can you write 0 as in the form of p by q? Yes, of course. We can write it 0 by 1, 0 by 2, up to so on. It means 0 is a rational number because we can write 0 in any form. मीन्स टू से हम 0 को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ रख सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट वुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. मीन्स p इज इक्वल्स टू 0 कि p तो 0 है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए. सो हेंस 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम p बाई q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं because we can write it in the form of p by q. So what's the answer? Yes, 0 is a rational number and we can write 0 in the form of 0 by 1, 0 by minus 1, that goes up to infinity. Okay, it can be written in the form of p by q, where p is equals to 0 and q would not be equals to 0. That would be the point. Okay, got it? So our next question, that we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. According to the question, we have to find out 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, so firstly we have to make 3 and 4 rational. So how could we do that? Firstly we have to put denominator as 1, and now the numbers becomes rational because these are in the form of p by q. So how many numbers now we have to find out? We have to find out 6 rational numbers. So our first step is we have to add 1 in that. जितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं उसमें आप 1 ऐड कर दो एंड देन यू आर गेटिंग 7. अब आप 7 की मल्टीप्लाई 3 by 1 और 4 by 1 से करो विद नोमरेटर ऑल्सो एंड विद डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो 7 3s are 21 and 1 7s are 7, and here also 4 7s are 28 and 1 7s are 7. So their products are 21 by 7 and 28 by 7. Now we have to find out 6 rational numbers. Now it's very commonly that 21 by 7 और 28 by 7 के बीच में we are having 6 numbers. 6 numbers are exist in between them. So what are the numbers? Numbers are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. So that would be your answer. Okay. So dear, our next question number 3 is find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. According to the question, we have to find out 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Okay, हमें 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के 5 rational numbers बताने हैं. So how could we do that? वही first step, जितने rational numbers find out करने हैं उसमें 1 add कर दो, then you just get 6. अब आप 6 की मल्टीप्लाई करो अपने दोनों rational numbers के साथ with numerator also and denominator too. So 3 6 are 18 and 5 6 are 30. So the product is 18 by 30, and from here also you just get 4 6 are 24 and 5 6 are 30. So 18 by 30 और 24 by 30 के बीच के 5 rational numbers आपको find out करने हैं. So the numbers between 18 by 30 and 24 by 30 are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. So that would be your solution. Okay. Clear? So dear, our last question would be question number 4. In that question, what you have to tell? You have to tell in that are these statements are true or false? आपको ये बताना है बच्चे कि क्या ये जो statements आपके पास 3 given हैं, are these statements are correct or incorrect? If the answer is correct, then you have to represent in the form of true, and if your answer is incorrect, then you have to give the answer in the form of false. And also you have to tell the reason also. You have to tell the reason that how can you say that your statement is correct or not correct. Okay, so let's start with the first point. And the first point is you have to tell that every natural number is a whole number.
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको क्या लगता है बच्चे कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन से दैट. हाउ? बिकॉज our natural numbers are counting numbers that start from 1 2 3 and goes up to infinity, and our whole numbers are starts from 0 and goes up to infinity. Means जो natural number के जो counting numbers हमारे पास होते हैं, they all are existing in the whole numbers too. वो सभी numbers whole numbers में होते हैं. Okay, so that's why we just write it true, because every natural number lies in the collection of whole numbers. क्योंकि natural number जितने भी होते हैं वो सभी whole numbers के collection में exist करते हैं. Okay, so that would be your first answer, that it would be true because every natural number lies in the collection of whole numbers. Okay, got it? So our next point, every integer is a whole number. What do you think about that? कि क्या सारे integer whole numbers होते हैं? Okay, we just take according to this point, z is equals to integers, because integers को हम capital Z से represent करते हैं. उस capital Z में means उस integer में हमारे पास सभी तरह के negative numbers होते हैं. ज़ीरो होती है और नेचुरल नंबर होते हैं. इट मीन्स ज़ीरो और नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया और नेगेटिव नंबर्स भी हो गया. इट मीन्स हर तरह के नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, दैट वुड बी इन्वॉल्व इन इंटीजर्स. सो इंटीजर होल नंबर हो सकता है. इंटीजर में बच्चे आप ये देखो, इस पर पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे और ज़ीरो भी आएगी. और होल नंबर में सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर. इट मीन्स अगर ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो इंटीजर होल नंबर्स हो सकते हैं, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? सो दैट वुड बी द रीज़न. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ओनली दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट. सो वी जस्ट राइट डाउन द आंसर फॉल्स. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिकॉज नेचुरल नंबर्स में जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स. वो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करते. ओके, सो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, -3. अब -3 इंटीजर तो है लेकिन -3 होल नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में सिर्फ क्या आता है बच्चे? ज़ीरो आती है और आपके पास क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो दैट वुड बी योर पॉइंट. गॉट इट? नाउ द लास्ट पार्ट, पार्ट 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, थिंक अबाउट दैट कि क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? अब बच्चे देखिए, हमने एक डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में दैट रैशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, सभी इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, एंड सभी होल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. हाउ? बिकॉज वी कैन मेक दैट, क्योंकि हम उसको बना सकते हैं. सपोज वी आर हैविंग वन नंबर that is only 1. अब 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q. हो सकता है. लेकिन अगर आपके पास नॉर्मली एक आंसर, एक पॉइंट गिवन हो, सपोज इट इज़ गिवन टू यू 3/5. सो व्हाट डू यू थिंक? 3/5 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. दैट वुड बी अ रैशनल नंबर. बट क्या 3/5 होल नंबर है? क्योंकि हमें पता है होल नंबर में तो सिर्फ बच्चे क्या आता है? एक ज़ीरो आती है और एक तभी तरह के पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. अब ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, ठीक है, हम उनको p/q की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज बाय पुटिंग 1 टू इट्स डिनोमिनेटर. बट इफ इन दैट केसेस, इन द केस दैट ऑलरेडी गिवन टू यू दैट 3/5, सो व्हाट डू यू थिंक कि 3/5 p/q की फॉर्म में है? दैट वुड बी अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है, बट इट कांट बी इंक्लूडेड इन द होल नंबर्स. ओके, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट से दैट false, because numbers in the form of p/q are not included in whole numbers. क्योंकि जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं that would not be included in the whole numbers. Okay, so thank you, have a nice day.